Chale, all the best. Thank you. Hello, welcome to Aapki Khabar, and today we are going to start our session in for the field of HR. And the viewers of Aapki Khabar very well known. Aapki Khabar and UP HR Council brings the stories regarding HR. And today our guest is Dr. Gaurav Butch. He is the experienced person and having the experience about 23 years in the field of HR. And the well-known face for the Aapki Khabar viewers, Meetu Dantre. She is the moderator of this program and uh, moderator of this program and also the member of UP Wiki HR Council. So now let us start and over to you, Meetu ji. Good evening, everyone. Thank you, Rajiv ji. A very warm welcome to Dr. Butch. Hi, Gaurav. My pleasure. So today we are taking the advantage of a PhD MBA who's had more than 2 decades of experience in HR. Dr. Gaurav is currently serving as CHRO and Group Head HR for Rasna Group Ahmedabad. And also, he's been awarded with many awards, including the Corporate Excellence category by CE Worldwide and Indra Brand Slam Award for Business Excellence in HR. Dr. Gaurav has also been certified as a UCG PhD guide and has more than 42 plus research publications to his credits. So, not taking a long further discussion, I would like to once again invite you on the platform of Wiki UPHR and Aapki Khabar, a joint venture for HR Impact series. So, Dr. Gaurav, I would like you to take up the stage and tell us about your journey and how you have come through, since our topic today is how companies are moving from city 1 to city 2 tier and getting a better exposure for both human resource as well as infrastructures in the places. So, what is your personal experience? Please share. First of all, it's my pleasure from Rajiv and Neetu both to give an opportunity to come on this platform. And I think this topic covers 90% of the crowd, if you look at among the industry, right? Correct. So at this point of time, we are talking about tier 1 to 2, right? But inversely, if had been earlier tier 2 to 1, because of we all people who have came from tier 2 to tier 1, and I think there is a very good opportunity if there is a tier 2 city has an advantage to grow, like Haridwar or Bhavnagar where I belong to, right? Or you belong to. Yeah. So this is absolute reverse kind of phenomenon happening, to the industry. If I talk about myself, I belong to a very highly academic family. My father was a director at Kanpur, okay. So, but from IIT, he migrated to Bhavnagar as the first vice chancellor and head of the department. He was the dean of science faculty, and that's how I born up to Bhavnagar. Now Bhavnagar is tier B city, tier 2 city, you can say. So after my completion of my graduation and post-graduation master into management, I have to think about my employment right. Every MBA have a prosperity, look at the prosperity to grow at the next level, right? You or me, whatever. So my first journey from Bhavnagar, I moved to Jamnagar. That was my first professional assignment, where I joined SR Group, SROI. From Jamnagar, I moved to Suzlon, Pune. From Pune, I came back to Gandhinagar. Okay, I joined, Gujarat again. And from Gandhinagar, I settled down to Ahmedabad. Ahmedabad, I moved to Junagadh. So now we are talking about tier 1 to tier 2, right? Yeah, correct. So, under Junagadh, there was a Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited who has started venturing the dairy sector, which has shut off in all those small cities. I was the lead HR identified as the head of the human resource to look after and restart this dairy unit. So that's how from Ahmedabad I moved to Junagadh. From Junagadh, Surendranagar, Rajkot, Bhavnagar, Kutch, all those sectors we have restarted dairy. Okay, so 5.5 years I moved to Junagadh, and from Junagadh then I again moved back to Ahmedabad. Now I'm settled down to Ahmedabad, right?
So, Okay. this is what my process journey. In the time, I completed my doctorate also in year 2011. Okay. I'm also PhD guide certified by GCC. So, seven scholars has done doctorate under me. Right. So, along with the corporate journey, I'm also a freelance speaker in a lot of management schools, more than 25 management schools, Okay. including I am Jammu, I am Ranchi. So, So quite a great journey you have done actually, and you were the my appropriate pleasure. speaker for us because I So, know that is some, what I'm saying. या who had their own personal journey, जिन्होंने एक tier 1 का भी culture देखा, tier 2, and as you correctly said, we get our education from whichever colleges we want to, but ultimately चाहे जिस भी city को belong करे, targeted 3 या 5 ऐसी locations हैं, those come or pop into our heads when it comes to looking out for Correct, employment. correct, So correct, that correct. makes a big impact. So I must say that this transition of tier 1 to tier 2 in company was already happening, but this got accelerated during pandemic also. So how do you think that this transition affects an employee culturally, and it affects the company also, because the company Correct. always has their own culture? How does it affect that? See, I first of all, I would like to tell here that transforming from tier one city to tier two is not a new theory or new thought, right? Right, right. And what I believe is the HR professional is culture has nothing to do with tier one or tier two or whatever, right? So it is more depend on how culture, which is being proposed by HR and senior management on the board to the company at large. So that is more important, right? I give you a simple example. So since 10 years back, if you have heard that L&T, Larsen and Subro has shifted their headquarters from Bombay to Baroda. Why? Right? Aditya Birla Minax, right? One of the biggest BPO in India, right? Supported by Aditya Birla Group, Yeah. has started their BPO initially at Bombay, but you won't believe, but then their first target was Baroda, Indore, Aurangabad, Jaipur, Lucknow. So that this tier two city. Why? So the very clear thought process is the cost wise. If you look at Bombay, Delhi, Ahmedabad, Pune, Bangalore, all those cities are highly costly in terms of construction or office premises, rental or a buying. Compared to those cities in Baroda, Indore, which is quite cheap. There is a huge space. So development wise also they can think of wider, right? If you find any place in Bombay, you will find vertical towards side, right? You Right. will not find horizontal on the land. But if you look at the knowledge city L&T has developed in Baroda, it's a huge landscape, wonderful gardening environment, So all those stuff makes a lot of sense. One point. Second point, uh, if I prospectively look at HR point of view, you enjoy more valued family time if you are staying into tier two city, right? Because very less traveling. One of my friends who used to work in Bombay, so just one day I said, when he was newly settled, "Okay, what is your office hours?" He says, my office hours is 8 hours, but my office total hours is a 30 hours. So 2.5 one time journey, to reach office, he has to start 2.5 hours back from the home. The same way once he completes job, it requires 2.5 hours again to reach at his home. So where, is just like a hostel for him, right? रात को गया खाना खा के सो गया सुबह अर्ली मॉर्निंग so all those Family galeries time. are there in tier one city. So vis-a-vis, if you are there into a smaller city like Bhavnagar or Rajkot or Indore or Baroda, right, or Jaipur, Lucknow, where you save your timing in the transition, right, Correct. Correct. and which you can keep on adding into family value. So मतलब family satisfaction अपने आप बढ़ता है, तो जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, so that is one of the finest example. If company is located in tier two city, one of the major achievements of work life balance can be achieved. Number two. Number three, the very after pandemic, everyone are talking about the health and fitness and consciousness about the you know Well-being. whole lot Yeah. of things.
Yeah. So Well-being. if you look at a tier two city, it is comparatively very clean and open air. If you go in Hyderabad or Bangalore today in the peak hours, you cannot breathe even properly. That pollution. So Bangalore once upon a time was so cold, Bangalore, Pune, weather-wise, they're number one in country, right? आज उसका सीन देखो तुम, राइट? उसके सामने मैंने एक WHO का एक एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक महीने पहले कि they have identified the purest find of land in across the world is in a Saurashtra belt. तो जहाँ अमरेली भावनगर वगैरह जो बेल्ट है सोमनाथ द्वारिका, राइट, Okay, वहां okay. पे वहां की जो हवा है वो इतनी शुद्ध है कि लोग बोल रहे हैं कि देर आर लॉ ऑफ एनआरआई वो आर स्पेंडिंग, मतलब बाहर से लोग फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी टू स्टे इन देयर रिटायरमेंट टाइम, वो लोग बोल रहे हैं कि वहां रहने से 10 साल उसकी उम्र बढ़ जाती है, वेरी प्योर Right. है। हम लोगों ने कोविड के टाइम देखा भी, पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग देयर, यू नो देयर आर लॉट ऑफ मारवाड़ी फैमिली हु आर एस्टैब्लिश्ड इन दलाल से मुंबई, right, who belongs to either Rajasthan or MP or part of Gujarat. They have gone back to their Haveli 30-40 years back और पूरा मतलब समझो कि पुरातन खाते की हो गई है, उसको पूरा रिनोवेट कर दिया है एंड दे आर मेंटेनिंग नाउ कि ऐसा पहले नहीं आया जो वी वुड लाइक टू स्टेशन देयर, कम से कम दे कैन स्टे इज अ क्लीन एयर, राइट? बड़े So सिटी में क्या that होता है, is कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। कोरोना का right. सबसे बड़ा इम्पैक्ट वाई मेट्रो सिटीज को सबसे झेलना पड़ा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंजेशन। छोटे Yes. सिटी में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है इफ यू लुक एट कोरोना कोविड, राइट? सबसे ज्यादा हीट हुआ है बड़े सिटी हुए। So this itself proves that tier two cities we are trying to develop more and more, which India is happening in last 5-10 years. If you look at those spots like Chandigarh, Lucknow, Jaipur, Indore, Baroda, Surat, right? Those are tier two cities. They are developing a huge way, huge scale, right? Yes. So cheaper medical facility, आपको शायद पता होगा कि इंडिया मेडिकल फैसिलिटी इज कंपेरेटिवली वेरी चीप कंपेयर टू अब्रोड कंट्री. So there are a Right. lot of people from Chicago and New York who are coming to Bombay and Ahmedabad or Hyderabad to take their higher operation or whatever advanced level operation. यहाँ ठीक हो गया, they go back. So itself indicates that comparatively medical facility is also comparatively very cheap. तो मतलब एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन हो गया। बड़े सिटी में बहुत ज्यादा लोग हैं तो उसके कारण इंडस्ट्रीज व्हीकल्स, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो अपने आप वहां पे पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। छोटे सिटी में जो क्लीन और नेचुरल एयर है उसका लोगों को हेल्थ वाइज बेनिफिट होगा, तो ड्यूअल पर्पज होता है। और आजकल काफी रिवर्स ट्रेंड भी जानने को मिल रहा है कि पीपल फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई, people are migrating to smaller towns nearby, सोलापुर, औरंगाबाद। और काफी लोग बोलते भी है कि अब थक गए यार बॉम्बे में, बड़ा सिटी है, बात सही है, लेकिन Right. ट्रांजिशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, everything is a chaos. So people would definitely look around to settle down into smaller places. They have started investing also accordingly, you know. So that is what my submission for this question. I think that because of this, people who are taking education from big cities and staying there, अब वो companies को ये भी समझ में आ रहा है that if we go for a campus outside metros, so we will get a cheaper human resource also, who would be family wise also a Absolutely little more satisfied, और उनका एक अपना एक cultural background जो रहेगा, they would take it forward according to the organization's requirements. So as you correct, stated that correct, the company's culture is something that is always led by the HR and their perspective in alliance with structure or goals of the organization, whatever the visions are. But एक correct. strategical analysis कैसे की जाए when, for example, if organizations like Wipro, Infosys, who've taken a move from one tier one cities to tier two, so थोड़ा बहुत तो एक strategy का भी change जरूर आया होगा. So what is that place? How does it play strategically? For from the perspective of HR. See, उसमें क्या होता है कि आप देखो तो जनरली बिकॉज द टायर वन सिटीज आर ओवर क्राउडिंग itself says, strategy, see, change management cannot only propose only by one part, right? Every part of the system or every part of the society involved into the change management, right?
तो कंपनी अकेली चेंज मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। कंपनी के पास यदि अपॉर्चुनिटी है टायर बी सिटी में भी अच्छी प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, तो वहां से कैंपस से लोग बच्चे उठाएंगे, राइट। आपको मैं सिंपल बताऊं कि इफ यू लुक एट कानपुर और खड़गपुर, दे आर द फाइनेस्ट आईआईटी देन इवन टू दिल्ली एंड चेन्नई, राइट। आप आईआईटी का जो लिस्ट यदि आप कंपेयर करोगे तो आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी खड़गपुर आर द टॉप। So they are Correct. tier B city, yeah, they are tier 2 city. तो इस tier 2 city also, tier 2 city में भी यदि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट स्कूल, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह दी जाए, तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। Secondly, organizations themselves are investing in a huge way. They can also invest for entertainment or amusement kind of facilitation for their mass crowded people. If you go to Jamnagar today, Jamnagar आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था। आज पूरे Reliance जामनगर के facility. एरिया में घूमोगे तो तुम्हें हर बिल्डिंग में रिलायंस का लोगो दिखेगा। मतलब दे हैव Right. डेवलप फ्रॉम ग्रास रूट कि लेट अस क्रिएट द बिल्डिंग, है ना। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लेट अस पुट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रिलायंस की टाउनशिप में जाओ तो दे हैव बेटर मॉल देन इवन दिल्ली एंड बॉम्बे यू फाइंड। उसका खुद का जो मॉल है वो इतना बड़ा है कि मतलब आपको लगेगा कि आप बॉम्बे में घूम रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी इज ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी हेल्प अवर एम्प्लॉइज, ठीक है। हर रोज उसकी एक फ्लाइट जामनगर से निकल के बॉम्बे जाती है और शाम को बॉम्बे से आके जामनगर उतरती है। एंड दे फैसिलिटेट देयर एम्प्लॉई के whosoever want to go up to Bombay, they can use this flight. So those are a part of strategy, right? So automatically people will definitely support if there is a strategy, है ना। उसकी खुद की स्कूल है। आज आप देखो टायर 2 सिटी में काफी बड़ी कंपनीज की टाउनशिप रहती है, राइट। अब जिंदाल देखो, रिलायंस देखो, एस्टार देखो, ये जीएससीएल जहां मैं था सुत्रापाड़ा वेरावल में, तो उसकी खुद की टाउनशिप है। उसकी खुद की टाउनशिप में इंटरनेशनल लेवल की स्कूल है। तो उसके बच्चे को फिर अहमदाबाद में है या सुत्रापाड़ा में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Because what they getting the culture in the tier B city also are equivalent for tier 1 city. This is all what we create the facilitation for them to grow. आपसे आप इंडिया की आप ग्रोथ रेट को चेक करो तो सेमी अर्बन टू अन अर्बन प्लेसेस में भी आज बड़ी बड़ी ब्रांड अवेलेबल है ना। Right. 10 साल पहले आप कोई छोटे गांव में जाओगे तो आपको वीवो और मोटरोला का बोर्ड नहीं दिखेगा। आज छोटे गांव में जाओगे तो वहां पे भी पेंट्यून है, वहां पे भी फ्यूचर ग्रुप का मॉल है। तो दोज थिंग इटसेल्फ सेइंग इंडिया इज इन अ ग्रोथ सेक्टर वेयर ओनली मोदी जी का विजन बहुत क्लियर है कि इफ यू वांट टू ग्रो, इफ हमको विकास चाहिए तो इंडिया का हर पार्ट का विकास चाहिए। फिर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली तरक्की करे और बाकी कर जाए तो विकास नहीं होगा। डेवलपमेंट इज अ Overall. वर्सेटाइल। तो आसाम का कॉर्नर भी डेवलप करना पड़ेगा, वो भी हमारे हिंदुस्तान की जमीन है। Right. आप ऐसा सोचोगे नहीं कि वो उसको जाने दो, दे आर वेरी वेल पावर ऑफ आवर कंट्री, यू नो। वहां पे डेवलप होगा तो पीपल विल स्टार्ट माइग्रेटिंग देयर आल्सो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये It is टेररिज्म about ये the वो सब vision. डेवलप हो रहा है। टेररिज्म वगैरह डेवलप इसलिए हो रहा है कि वो शांत एरिया है, लोगों का बहुत जान आने जाना हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जैसे बोल रहे हैं ना कि जंगली एनिमल्स होते हैं जो वाइल्ड एनिमल, वो क्राउड के बीच में नहीं आते हैं। सेम सिनारी हो गया कि वहाँ जो बाहर के लोग भी आना चालू हो जाएंगे, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगी, वहाँ के लोकल लोगों में एजुकेशन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, बाहर के लोग आना शुरू हो जाएंगे तो कल्चर माइग्रेशन होगा ऑटोमेटिक। तो मिक्स कल्चर में ऑटोमेटिकली पीपल फंसता है, दैट इज वेरी क्लियर। आज इंडिया में कोई भी कोना ऐसा नहीं है बड़े सिटी में जहाँ मिक्स क्राउड नहीं है ना। आप यहाँ पे भी अहमदाबाद में जो बंगाल पूजा एसोसिएशन जो है वहां घूमोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप कोलकाता में नहीं हो। वाई? बिकॉज मिक्स कल्चर, पीपल लाइक गोइंग देयर, राइट। सेम आई थिंक पंडाल वगैरह सब जगह होता है। गणपति गणपति जो महाराष्ट्र और बॉम्बे का त्योहार है, देश के हर कोने कोने में आज एंजॉय हो रहा है। क्यों? कल्चरल चेंज, outsiders are also settled in different part of the country, and that's how the entire prosperity is growing. So that is what my So submission is. basically, we can say that it is the vision of the organization and a little bit of more responsibilities towards the HR professional of the organization who can look into the requirement of the employees, उनका futuristic They approach. facilitate properly कि suppose नया बंदा कोई आ रहा है
उसको बोले कि यू डोंट वरी, विल हैव अ गुड Yes, एकोमोडेशन that फैसिलिटी, matters. या हमारे पास ब्रोकर है वो आपसे लगा के हम लोग भी ये करते ही है, बाहर से लोग आते हैं उनको भी सी टू दैट गेट दैट गेट दैट गेट इनफ एस्टैब्लिश एवरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए स्कूलिंग से भी हम कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, काफी स्कूल्स में हम बात करके रखते हैं, यू नो तो वहां पे भी स्कूलिंग वगैरह तो इजीली हो जाता है, तो इफ फैसिलिटेशन गेट चेंज, पीपल वुड डेफिनेटली लाइक टू कम, Yes, that is the Transportation, way. if you look at the kind of roads that we have now, right? अर्लियर जो आज से 10 साल पहले का डेवलपमेंट देखो और इंडिया का आज का डेवलपमेंट देखो, हर जगह एटलीस्ट 4 लेन 6 लेन रोड बनते जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नॉट टेकिंग सो लॉन्ग टाइम, पहले की से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत फास्ट बढ़ गया है। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो पहले मतलब अहमदाबाद से बड़ौदा डेली अप डाउन करते थे, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग अप डाउन फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद एवरी वीकेंड दे गो दैट। So Okay. this itself shows that people are migrating one after another way. सो फैसिलिटेशन इज द की वर्ड कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉय का ट्रांजिशन करवाते हैं, एंड दैट्स द Correct, मेजर वे हाउ somebody कैन बी मोर comfortable एंड मोर एक्सेप्टेबल टू द चेंज ऑफ सिटीज एंड टेयर correct, डजंट मैटर अगर उस तरह की फैसिलिटीज हम लोग ट्रांजिट करवा के ला सकते हैं तो। correct, correct. Well, I think when you are using this facilitation word, it itself says कि the companies are also making it a focus कि हम HR में जिस तरीके से लोगों को थोड़ा free hand दे, the way they can help retain better human resource for the organization for long term. So you say that the company's approach has also changed in those perspectives, that the company's approach has become a little more what should I say, a little more human centric. Can you say that? More human centric, more broaden up, because see, जब बंदा कोई एक सेंटर से बिलोंग करता है, उसकी जगह हर डायरेक्शन से लोग आते हैं, तो यू नीड टू डेफिनेटली फैसिलिटेट अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, अब तक आपके पास नॉर्थ के लोग हैं, अब नाउ धीरे धीरे साउथ के लोग भी आना शुरू हो गए, तो यू नीड टू सर्व देम इडली सांभर, राइट, बड़ा होता पाम। So automatically, mix of culture will happen to lot of different kind of perspective. वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले जो आज से 10 साल पहले देखो आप, गणपति महाराष्ट्र और बॉम्बे में हुआ करता था, अब सब जगह क्यों है? Because people have spread it across the country, right? So automatically, culturally also, their demand, you know. तो दैट एक्चुअली मेक्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि अगर कंपनी इस चीज को शुरू से अपने मन में लेके चलेगी, देन ऑब्वियसली थिंग्स बिकम मोर इजी एंड पीपल बिकम मोर अप्रोचेबल एंड दे आल्सो हैव अ एक्सेप्टिंग माइंडसेट टुवर्ड्स की फाइन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेट्रो, वो टैग सिर्फ दिखने का है, अगर फैसिलिटेशन वैसा ही मिल जाए, सो वी आर हैप्पी विद इन आवर ओन टाउन्स आल्सो। सेम हैपेंड इन, Absolutely, because companies के लिए भी I think it becomes a very big monetary benefit if they are coming of course, to cities and they get kind of relaxations in taxations and I think licensing वगैरह, especially for the product, lot of, it becomes very easy and becomes correct. very approachable also. Another thing, if you look, all metro city or bigger cities are overcrowding, right? And villages are getting vacant. Right, Why? right. But now the trend are reversed. People are going back to their villages also because they have the same facilitation. पहले वहाँ टेलीविजन नहीं हुआ करता था, राइट, ब्रॉडबैंड नहीं हुआ करता था। और इंडिया के कोने कोने में आप चले जाओ, छोटे विलेज में, वहाँ पे भी आपको 4G 5G इजीली कैच हो रहा है सिग्नल। So why they want to grow? Why they want to leave this lush green areas? Secondly, technology. Technology has impacted huge way, है ना? तो एग्रीकल्चर में भी आज कॉर्पोरेट के जरिए देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फॉर एग्जांपल, आई बिलोंग्स टू फूड इंडस्ट्री, तो मुझे पता है कि बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज है, वो खुद फार्मिंग में पैसा लगाती है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजिकल लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो पीपल विल डेफिनेटली गो देयर ऑल्सो। और वहां जाकर उसको पता चलता है कि इतना अच्छा एरिया हम छोड़ के मतलब मूर्खाई कर रहे हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेट्रो सिटी के क्रेज में हम इतनी अच्छी एनवायरमेंट वगैरह गवा रहे हैं, विच पीपल Yeah, आर I धीरे धीरे myself, उसको भी या correct. Me, I तो have an example
recently only, ये जो अभी आपकी यूपी में राजीव जी, I think you would be the right person to tell me. लखनऊ में अभी recently G20 that happened in the UP state for all the facilitation of tier 2 again. So there also they focused on tier 2 cities जिनको कि हम और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के वी कैन ब्रिंग देम टू पार। और फिर चाहे वो झांसी हो चाहे लखनऊ हो, तो झांसी का आदमी भी जी लखनऊ नहीं जाना चाहेगा, वो अपने ही एरिया में उस चीज को और बेटर इवॉल्व करना चाहेंगे। तो करेक्ट, दिस बिकॉज एवरीवेयर एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल दिस डेज, है ना? तो इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यदि हम गांव को पकड़ के नहीं रखेंगे तो आने वाली जेन जी है, वो कोई नो वन वुड लाइक टू गो टू फार्म, यू नो। तो खाएंगे, राइट, हम खाएंगे कैसे, यू नो? एंड हाउ वी आर विल देखिए फीड? प्राइमरली एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। या यस, या और फिर क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता ना, कोई एक जगह पे ओवर डेंस हो जाता है, कोई जगह पूरा वैकेंट है, यू नो। तो द इक्विलिब्रियम इज नॉट गेटिंग मैप। तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको आजकल बहुत ट्राई कर रही है कि सब जगह पे लोग स्प्रेड हो, तो एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी के कारण देयर आर लॉट ऑफ स्कोप कमिंग अप। I have actually, this is a very valid point, and it actually gives a vision how the whole country can come on the same platform. लेकिन मेरा एक छोटा सा इसमें एक छोटा सा संशय ये आता है कि if we look at China, though we are not on those lines, but अगर हम चाइना को देखें तो वहां पे भी उन्होंने the way they progressed, try to make the country progressive was कि we would divide each and every area provincially, और उस प्रोविंस को ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग जिम्मेदार बना देंगे। सो दो इट्स नॉट हैपनिंग इन इंडिया, बट डू यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हैज अ लिटिल बिट ऑफ बैकफायर आल्सो वंस इन अ व्हाइल? कोई तो डाउनसाइड वही तो दिखता हो रहा है ना। नहीं नहीं, वो वही हो रहा है। इफ यू लुक प्रॉपरली, then probably the southern belt has recently being identified as a tea and coffee manufacturing hub, for example, right? है? राइट, राइट, In India, if you look at David I was referring Bank of India in ET, तो देश में 7 अलग अलग एरियाज में मोदी जी has identified टेक्सटाइल जोन, राइट? जो यस, जिसके पास ज्यादा वॉल्यूम है टेक्सटाइल बनाने की, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वही बोला आपको कि पहले आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उन एरियाज में कोई ध्यान ही नहीं रहता था। आज वहां पे भी 6 लेन हाईवे बन रहे हैं, वहां पे भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यू नो। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कंट्री, यू नो, नॉट ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज टू बी मोर जेनरिक एंड मोर इट हैज टू ह्यूमन बी मोर सेंट्रिक। जनरिक, तो कोई ऐसा बोले कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, दे आर द हाईएस्ट डेवलपिंग, फाइन। बट उसकी जगह क्या होना चाहिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दोज एरिया, Assam, Arunachal Pradesh are extraordinary in those areas. So I'm not saying that every part of the country has same wavelength of development. लेकिन कोई एक पार्ट में तो होता ना, फॉर एग्जाम्पल असम साइड देयर वंडरफुल टी गार्डन, so you राइट, can specially design as a tea, SIR or kind of thing, उसकी जो सो लोकल लेवल की, ये प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। उसकी जो लोकल लेवल की जो ट्रैवलिंग मतलब टूरिज्म में से उसको डेफिनेटली स्टैंड किया जा सकता है, राइट? राइट, तो बेसिकली इनकॉर्पोरेट करने का है कि अगर आप एक सिटी टीयर 2 सिटी को भी आप ला रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, सो हाउ टू इनकॉर्पोरेट एंड एम्बाइब देयर कल्चर एंड इफेक्टिंग देम पॉजिटिवली, कि उनका करेक्ट। अपना और जो जो एरिया का जो 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 कोर कॉम्पिटेंस है उसको डेवलप किया जाए। और फॉर एग्जाम्पल पश्मीना शाल इन कश्मीर और केसर, केसर यस, इन द कश्मीर आर वेल पॉपुलर, so let us develop those scopes there more and more, which can be more publicly, which can be more professional way, you know, which can be bound for them to grow. yeah, I get that, I get that. So interesting topic and a very vast thing to cover, but since Yeah, we yeah, have less of time, I would have just one more question to close it yeah. with. Ki being a CHRO yourself and being the head group in a city to sorry tier and having an exposure of tier 2 as well, how do you think HR can play the most vital role for the organization to make it more acceptable and competitive at the same point, ताकि कंपनीज को See,
कि हम अपना फुटेज छोड़ right, के आए हैं। right. Unfortunately, in Indian industry, if you look at Indian corporate, people has understood the role of HR very lately, right? अदरवाइज मेरे हिसाब से रोल ऑफ एचआर करके कोई चीज को कोई खास नहीं है। जहां जहां हेड है वो सब एचआर है, सिंपल एज दैट, Right. राइट? तो फर्स्ट, इफ यू आर हेड ऑफ प्रोडक्शन, इफ यू आर हेड ऑफ सप्लाई चेन, दो यू आर फर्स्ट हेड ऑफ एचआर, राइट? बिकॉज आप खुद ह्यूमन है, right? So human resource cannot be a differentiate when there is a talk about the humankind. As simple as that. You know, unfortunately हमारे वहाँ स्कोप और इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं दिया जाता था, बट आज आप देखोगे हर इंडस्ट्रीज में बोर्ड लेवल तक एचआर की चेयर है, which has understood कि unless we don't take the HR in loop, I think everything will be scattered. Technology cannot override human approach at all, each category. So there is always HR seems as a very vital and important role in every perspective. So, how would you like to just conclude this whole session? A very interesting topic, that what would be the HR's perspective to bring the corporates to tier two cities? How would you encapsulate it? A lot of impact and a wonderful and very interesting topic, I would say. And definitely, whenever HR identify through placement, campus placement, campus hiring, so tier two having a very dense people available who are really intellectual, who are ready to work. So if we focus better in tier two also, I think we get a wonderful manpower, which can leverage the shortage of manpower, right time at the right speed. Very well said. Thank you so much for today's session, Dr. Gaurav. It was an My pleasure. interesting chat, and I My would pleasure. definitely would like to call you back upon our stage with some new insights and new topics as well. It would be So, my pleasure to come physically also, given a chance, for definitely. sure, any time you are most welcome. And now I Yeah. would just hand it over to Rajiv ji to conclude the session for today. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। डॉक्टर गौरव जी ने जो सारी बातें कही हैं, ये वाकई में जो ये टीयर टू टीयर थ्री सिटीज की जो बात हो रही है, उन्होंने अपनी बातों में एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग की है, बहुत बड़ी ब्रांडिंग की है इंडिया के लिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक क्षेत्र के लिए उन्होंने एक बताया, जो एनआरआईज को उन्होंने बताया है कि जहां कम पोल्यूशन के एरियाज हैं वहां लोग आ रहे हैं। वाकई में इन फ्यूचर सबसे बड़ी डिमांड यही होनी जा रही है कि पोल्यूशन फ्री एरिया कौन सा है, फिर वहां पे टीयर वन और टीयर टू की बात नहीं होगी, फिर जाकर वही बात, क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा वो कर दिया है कि हर जगह सारी बहुत बढ़िया बात है आपने कही। कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, अब कहीं भी आप दिल्ली में चले जाइए, वहां आपको यूपी और बिहार के बहुत काफी लोग मिल जाएंगे। मुंबई में आप चले जाएंगे तो वहां पे यूपी बिहार के, गुजरात के लोग मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया सारे लोग मिल रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी Absolutely. सेम है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम टीयर टू टीयर थ्री सिटीज अगर डेवलप होते हैं, जैसे आईआईटी की बात आपने कही, नो डाउट आईआईटी कानपुर बेस्ट और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड को प्रोडक्ट्स दे रहा है अपने। दूसरी हम बात करें अगर जैसे यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो मैं देख रहा हूं सारी चीजों को। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, पहले जो लोग बाहर जा रहे थे अर्निंग करने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए मुंबई जा रहे थे, गुजरात जा रहे थे, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, ओडीओपी प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हालांकि अभी ये बहुत फ्लो में नहीं आ पाया, लेकिन कॉन्सेप्ट नो डाउट बहुत अच्छा है और इससे लोगों को अपने घर में ही बैठ के रोजगार मिल रहा है, उनको बाहर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने घर Correct. परिवार के साथ में है अर्निंग। इवन अगर मुंबई में जाके अगर वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे होते और अगर लखनऊ में बैठ के वो अगर 50,000 भी अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए वो ज्यादा अच्छा है। Of अब हम course. बात करते हैं फैसिलिटीज की।
फैसिलिटीज आप देख लीजिए, मुझे यूपी स्टेट का पता है, हर डिस्ट्रिक्ट को एक मेडिकल कॉलेज दे दिए गए हैं, कहीं काम Correct. हो रहे हैं, काफी कुछ पूरे हो गए हैं। अब आप बताइए, जो डेवलपिंग स्टेज में, क्योंकि यहाँ क्या है कि अगर एचआर फील्ड की ही बात कर लें, मुंबई में, नोएडा में, दिल्ली में, वहां ज्यादा एक्सपेंसिव आपको लोग मिलेंगे, लेकिन लखनऊ में कंपैरेटिवली आपको कम में और काम वही करेंगे। तो ऐसे बिल्कुल। एरियाज के डेवलप होने से ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पर्सनली जानता हूं, एक इंजीनियर था इजराइल में, लखनऊ का, उसने कोविड के बाद में जॉब वहां छोड़ी लखनऊ में, और वो हनी का, शहद का बिजनेस कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड भेज रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड भेज रहा है। Nice. कई ऐसे लोग हैं, कोविड ने कई ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी। मैं जानता हूं, मेरठ का है यूपी में, एक महिला जो लोगों के घरों में काम करती थी, आज वह अचार बेच रही, 8 लाख का टर्नओवर है उसका पर मंथ का। वाओ, सोचिए दैट वहां इज व्हाट आई टीयर एम 2 टीयर 3 की क्या बात है। तो आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। लोग गांवों से दूर हो रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है, आपकी बात सुन के मेरे समझ में आ रहा है कि इन फ्यूचर वही याद आएंगे, क्योंकि इतना ये पॉल्यूटेड हो चुका है हर जगह। क्योंकि लोगों को अब अपना हेल्थ इशू, आफ्टर 60 तो हेल्थ ही नजर आता है, फिर पैसे नहीं ऑफ नजर कोर्स आते हैं कि कितने जो Right. कोरोना हैज प्रूव्ड ऑल द वे कि आपके पास करोड़ रुपया भी है, वो कोई कम का नहीं है जो आपकी हेल्थ साथ में नहीं है तो सही बात दे है, कुड दैट नॉट इज एबल टू ट्रू। सेव इवन करोड़ ऑफ रुपीज। नहीं, कोरोना का बेस्ट इम्पैक्ट यही रहा दैट इट्स ब्रॉट अस बैक टू आवर रूट्स, कि हम जो चीजें, बैक टू जिन अवर चीजों रूट्स, को हम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नजरअंदाज कर देते थे बहुत इजीली, एब्सोल्युटली, अकाउंट में नहीं लेते एब्सोल्युटली, थे, दैट हैज कम बैक टू पर्सपेक्टिव, फैमिली, योर एब्सोल्युटली, हेल्थ, and how you are contributing towards the society. These three things एब्सोल्युटली, have been a good thought. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Right. A very good. very good And session. I would Very like good. to I would like to thanks Meetu ji for bringing such interesting Thank you. Thank you so much. discussing, we are discussing here very interesting subject। इस पर कोई नहीं बात करता है। एक ये रहता है कि हाँ, ये छोटी जगहों से वहां फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन डॉक्टर गौरव ने कितनी अच्छी बात है कि हर जगह फैसिलिटी। आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, केवल एक आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। कई लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बहुत, आपकी बातों से आज लोग इतने इंस्पायर्ड होंगे। मैं आपको अगेन थैंक्स बोलना चाहूंगा। लोगों के अगर मन में कहीं ये रहा कि यार मैं बैंगलोर नहीं जा पाया, मैं दिल्ली नहीं जा पाया, तो उनको ये लगेगा कि आप जहां हैं वहां बेस्ट हैं, एब्सोल्युटली, और वहां एब्सोल्युटली। रहकर आप बेस्ट अपना जो है दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा, और मैं अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के सेशन में आप एक बार फिर से आके आपके खबर के व्यूअर्स को आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग अपनी चीजों को बताएं। बहुत बहुत My धन्यवाद। pleasure, my pleasure. I would हाँ, always, I'll wait for your call to come. Your one call, I'll definitely come थैंक यू, physically also. थैंक यू, We'll definitely be in touch, Dr. Gaurav. Thank you so much. My And thank pleasure, you, viewers, my for pleasure. थैंक यू, Thank giving us you, your time today. thank you, thank you. थैंक यू। Thank you.